Good morning students. Welcome back to my new video. In today's video we will do chapter 7, that is internet. So now let's begin our video. As you know that we have started this chapter in our live class. So all of you please get ready with your computer book and open page number 92, chapter 7, internet. So now what is internet? Internet is a global network that connects computers all over the world. Through internet, people share information and communicate from anywhere with an internet connection. इंटरनेट के थ्रू पीपल अपनी इंफॉर्मेशन किसी से भी शेयर कर सकते हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में हो, बस आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. You all know इंटरनेट प्लेस अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. इंटरनेट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में. अगर इंटरनेट नहीं होता है देन हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाते, हम आप लोग को वीडियोस नहीं सेंड कर पाते. सो इंटरनेट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सभी के लिए, और एज अ स्टूडेंट इट ऑल्सो प्लेस अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल. अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रही है, देन ईज़िली आप गूगल करते हैं, आप सर्च करते हैं नेट पे. सो इट्स प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो इंटरनेट इज़ अ टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क. ये एक टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है विच यूजेस, जो यूज़ करता है टेलीफोन लाइन्स, केबल्स, सैटेलाइट्स एंड वायरलेस कनेक्शंस. इंटरनेट सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ल्ड वाइड वेब एक बहुत इम्पॉर्टेंट सर्विस है जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है. एंड वी हैव ऑल्सो लर्न इन दिस चैप्टर दैट रिक्वायरमेंट्स फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट मीन्स हम इंटरनेट से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए. रिक्वायरमेंट्स मीन्स व्हाट आर द नीड्स फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट. And I have told you that who has discovered the internet. So the father of internet is Vint Cerf. Okay, so learn this name. Vint Cerf is known as father of internet. So now let's see the next topic, that is requirements for connecting to the internet. Means what are the things you require to connect through internet. So the first point is a computer. You need a computer. Now the second point is internet service provider. Means you need a service provider which will provide you internet facility. So the examples are dial-up, DSL, cable modem, wireless or dedicated high-speed interconnects. So these examples you have to learn which provide internet service. Now the third point is modem. You need a modem. Modem is used only when you have telephone lines. Okay, then only you can use modem. Now the next point is, that is browser. So browser is a user interface for displaying HTML files. Here HTML files means hypertext markup languages files. Now the next topic for today is internet terms. All these things we have discussed in our live class in detail. So now we will move to our today's topic, that is internet terms. In this you will learn the services provided by internet. So the first is World Wide Web. So World Wide Web is a service which is provided by internet. World Wide Web, www, is a combination of all the resources. So it is a combination of all resources on the internet. In easier term, it is a network of pages of images, texts and sounds on the internet which can be viewed using a browser. So it is a collection of pages of images. ढेर सारे pages की images हैं, texts हैं, sounds हैं. Now the next point is search engine. Search engine is a software program that allows internet users to search for content the
World Wide Web www, there are thousands of different search engines available on the internet, each with their own abilities and features. For example, Google, Bing, etc. So here सर्च इंजन मीन्स जहाँ पे आप कोई चीज़ें सर्च करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने फेसबुक सर्च किया, ओके, सो रिज़ल्ट आपको क्या दिखेगा, facebook.com दिखेगा. मीन्स जो आपकी जो सोशल नेटवर्किंग साइट है वो आपको दिखेगी. देन जो नेक्स्ट ऑप्शन आएंगे वो न्यूज़ आएंगे रिलेटेड टू फेसबुक आएंगे. मीन जो भी चीज़ें आपको सर्च होंगी वो रिलेटेड टू फेसबुक होंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने भी सर्च किया होगा, जब आप कुछ भी सर्च करते हो सो फर्स्ट आपका वो दिखेगा जो आपने सर्च किया. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने फेसबुक सर्च किया, सो फर्स्ट आपको फेसबुक दिखेगा. देन सेकेंड में आपको facebook.com दिखेगा. देन न्यूज़ रिलेटेड टू फेसबुक दिखेंगे. देन और भी चीज़ें जो भी फेसबुक से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी. सो ये सर्च इंजन है. सो डिफरेंट सर्च इंजन दिए गए हैं, अवेलेबल हैं जो कि इंटरनेट पे. So now let's see the next topic, that is web page. Now what is web page? Web page is a hypertext document connected to the World Wide Web. It is accessed by entering a URL address and contains text, graphics and hyperlinks to other web pages and files. So you have to learn this point that web page is a hypertext document. ये एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है. एंड वेब पेज तभी खुलेगा जब आप URL एड्रेस मेंशन करेंगे, लिखेंगे. एंड इट कंटेन्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड हाइपरलिंक्स. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आपने गूगल खोला, google.com खोला, सो वो क्या है, वो आपका एक वेब पेज है. सो वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. जो वेबसाइट होती है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती हैं. ठीक है, वेब पेज क्या हुआ, जैसे आपने गूगल खोला, सो वो आपका एक वेब पेज हो गया. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज URL एड्रेस. URL is a short form of Uniform Resource Locator. It is defined as the global address of documents and other resources on the World Wide Web. Below are some examples for the same. Example: www.google.com, www.yahoo.com, www.bing.com. So these all are example. So what is URL? URL एक एड्रेस होता है. ओके, सिंपल टर्म में आप ये याद कर सकते हो, ये एड्रेस होता है वेबसाइट की. ओके, एंड लर्न द फुल फॉर्म, जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी आप इसका याद करिएगा. URL इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. नाउ हियर वन फैक्ट इज गिवन, दैट इज विंड सर्फ is known as the father of the internet. So you have to learn this point. He was also the co-designer of the TCP IP protocol. Now let's see the next point, that is HTTP. So the HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. HTTP lets the browser to know what protocol is to be followed according to the domain. It includes that information transmitted over HTTP is encrypted and secure. Now HTTP ये आपने भी बहुत देखा होगा जब भी आप कुछ सर्च करते हो. सो जो HTTP है वो URL के पहले होता है. एंड ये आप टाइप नहीं करते हैं, जैसे आपने कुछ भी लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने www.google.com लिखा, सो उसके पहले ही HTTP आ जाता है. ओके, आपने देखा होगा जब भी आप सर्च करते हो. सो जो HTTP है वो हमेशा URL एड्रेस के पहले आता है. नाउ वेबसाइट. Website is a collection of related web pages. Website अभी मैंने आपको बताया था इस ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. ये कलेक्शन है वेब पेजेस का. जैसे वेबसाइट हो गई गूगल हो गया,
अमेज़ॉन हो गया, देन फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये आपकी पॉपुलर वेबसाइट है जो आपने बहुत सुनी होंगी. सो ये आपका एक वेबसाइट है. ओके. A website is a collection of related web pages including multimedia content identified with a common domain name and published as one web server. Here multimedia means it includes text, it includes graphics, images, audios, videos. Okay. So website जैसे कि आपका गूगल हो गया, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़ॉन, सो ये आपकी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं. So this chapter, internet chapter, is whole theoretical part. You have to learn it. Okay. यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, सब कुछ थ्योरी है जो आपको याद करना होगा. Now the next point is that is address bar. It is a text box in a web browser displaying the address of the web page that is currently being viewed. It identifies the user's location on the web and allows them to access different website. Okay. So address bar वो होता है जहाँ पे आप लिखते हो. Okay. जहाँ पे आप URL लिखते हो, where you write, that is the address bar. So now moving to next topic, that is internet services. So here you will learn the services that internet provides like email, social networking sites, news groups, e-learning, e-banking, e-commerce. So these all points you have to learn. We will discuss these points in our live class. So now I will end this class. Your homework for today is to do the exercise which is given on back exercise 1 and go through this chapter, learn this chapter. Thank you students. Have a nice day and don't forget to write your name, class with section for your attendance. Thank you students.